Hello friends, welcome to ProTalent, and here we are going to talk about the next part on your numerical ability, which is profit and loss related concepts. So I'm sure you are aware about that we have been putting some interesting questions for your basic concept developments. हमने जो भी questions आपके लिए रखे हैं, we think they are the best questions for your concept development. Please make sure that you continue to follow these questions and learn from it. Today we are going to talk about profit and loss for CLAT, and I'm sure they'll be very easy for all of you to understand how to go about it. So when we talk about profit and loss, the first and foremost thing would be there is something called selling price and there is something called cost price. Okay, so popularly known as CP, this is SP. So I'm sure every one of you know that there is profit is coming from SP minus CP. This is very easy. Okay, or there is a loss. Okay, so loss is when your CP is greater than SP, there you get your loss. Okay, so important point is you have to understand that there are three variables called SP, then there is CP, and then there is profit or loss percentage. So when we say profit or loss percentage, ये हमेशा profit हो या loss हो, उसका अगर percentage निकालना है, that is always calculated on cost price. Okay, it is always calculated on the cost price. This is very important. Okay, this is very important. Profit ho ya loss ho, this is always calculated on the cost price. Okay, so there are three cases can take place. You know SP, you know CP, you have to find out profit percentage. You know SP, you know profit or loss percentage, and you need to find out cost price. And third variety is you know cost price, you know profit percentage, or you need to find out selling price. ये तीन cases होते हैं primarily इसमें निकालने के लिए. ठीक है, I'm sure you can carry out some exercise. ठीक है, let me give you some exercise here. ठीक है, क्या कर सकते हैं आप इसके अंदर? Primarily you have SP, you have CP, and you have profit percentage. Okay, ठीक है, ये आपके सामने अच्छे सा एक्सरसाइज डेवलप हो रही है. आप बिल्कुल अपने हिसाब से घर जाके इसको ट्राई कर सकते हैं. So SP is let's say 180 and your CP is let us say 150, and you need to find out profit percentage. Similarly, let's say your SP is 200 and your profit percent is let us say 25%, then you need to find out your CP. And similarly, let's say your CP is let us say 250 and your profit percent is let's say 30%, and you need to find out your selling price. So this is how the questions will be. है ना? I'm sure you'll be in a position to do this. This could be your homework exercise. आप इसको practice के लिए कर सकते हैं, and that will be very useful to you. Okay? चलिए, great. So let's move further and understand कुछ और questions इसके नजरिए से. So first and foremost, that there is a concept called, you can say when you have mark price. So there is something called marked price. Okay? Mark price या बोले आप उसको list price बोले, they are one and the same thing. So ये mark price में से आपको कुछ discount मिलेगा. Okay, you will get some discount, and after discount you will reach to a concept called selling price. Okay, out of this selling price आपको profit भी हो सकता है, loss भी हो सकता है, और वहां से आपका CP है. So ये आपका relationship है. So ध्यान रहे, profit and loss हमेशा calculate होगा CP के ऊपर. Discount is calculated always on mark price, और मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में आपको रिलेशनशिप ढूंढने का पूछ सकते हैं. ठीक है, लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, लेट अस से देयर इज सम आइटम एंड देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 50%. ओके, देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 50%. 50% डिस्काउंट के बावजूद देयर इज 50% का प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, सो ये जो मार्क प्राइस है उसको कॉस्ट प्राइस से हमने कितना परसेंटेज you can say ज्यादा मार्कअप किया होगा. ठीक है, that's a kind of question. So let us assume mark price to be 100. Now that's an easy thing है ना.
हमेशा कहीं पे भी दिक्कत पड़े परसेंटेज में, the best thing would be calculate it on 100. okay, so this is 100 mark price थी, उसके ऊपर हमने डिस्काउंट दिया which is 50% is discount, so that is minus 50 and you will reach to, you can say 50 would be your selling price. ठीक है, 50 selling price पे you are getting a profit of 50%. So that means selling price is equal to cost price plus profit percent of CP. अपने केस में 50% profit था, so it will be written as 1.5 of CP is equal to your SP, and SP is equal to 50. So CP would be 50 upon 1.5. So that is nothing but 33.33 rupees. Okay, now this is your cost price and your mark price was 100. This was your mark price. ठीक है, आपने कितने परसेंटेज उसको मार्कअप किया था? Now the difference is 66.67. okay, ठीक है, that means you markup it by 200%. बिल्कुल 33.33% का दो गुना, and therefore that is 200%. ठीक है, this is very easy and I am sure you will be in a position to understand this. ठीक है, let me start. I'll start with the questions and एक एक करके questions पकड़ते हैं, and I am sure you'll all are smart students and you'll be in a position to learn it very easily. ठीक है, बिल्कुल easy concept है, एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस एक पूछा ही जाएगा. Let me start with question number 1. It says the car was brought for 550 पहले खरीदा था. It was resold at 20% more. So 550 was initial price and there is 20% more. ठीक है, 550 का 20%. How do we do this? 20%, 10% plus 10%. 10% of 550 would be 55 and further 10% would be, you can say, total 110. So if I add 110, it turns out to be 660. Okay, so that is the selling price. 660 is my selling price. There is 25 worth repair were made. 25 rupees का repair हो गया. So that means your total cost, okay, your total cost would be 550 plus 25 and that will make it to 575. This is what your cost is. Determine the net profit. The net profit would be ठीक है, selling price which is 660. ठीक है, net profit would be SP minus CP. Selling price is this, 660 minus cost price is this, which is 575, and therefore your benefit would be, you can say, 85. Okay, so answer would be 85. है ना, काफी easy है, I'm sure सबको आता होगा. Let's move towards question number 2. Now this is very easy. Okay, ठीक है, remember the words. ठीक है, आप कभी भी परसेंटेज और लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड बात करें तो हमेशा ध्यान रखिए, कैलकुलेशन आपके लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा. कॉस्ट ऑफ 2 chairs इज सेम. सो देयर आर 2 chairs. ठीक है, देयर इज चेयर 1 एंड देयर इज चेयर 2. दोनों की सीपी कॉस्ट प्राइस इज सेम. लेट अस अज्यूम इट टू बी 100. ठीक है, एंड वन वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट and other was sold at 15% loss. What is a net profit or loss? Total cost. Okay, so your total cost would be 200. You are getting a profit here, so your selling price is 120. Here your selling price would be 100 minus 15%, which is 85, and thereby you will have total amount would be 120 plus 85, which is 205. Okay, so total cost is 200, selling price is 205. So total आपको 5 rupees का प्रॉफिट हुआ. ठीक है, और ये जो प्रॉफिट है दिस इज परसेंटेज में निकालना है, तो क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी. दिस इज योर सीपी डिवाइडेड बाय 200 into 100. That means it is 2.5%. I hope this is very clear. Okay, let's move towards. ठीक है, याद रहे यहाँ पे क्या था? कॉस्ट प्राइस. ठीक है, एंड देयरफॉर दिस वाज इजी. अगर कोई कारण से आपको ऐसा सवाल दिया गया दैट इज, और ये स्टैंडर्ड सवाल है, मुझे लगता है एग्जाम में ये पक्का आएगा. ठीक है, इट सेज 2 watches were sold for 48 each. So that means watch 1
वॉच 2 एक का सेलिंग प्राइस 48, दूसरे का भी 48, एंड इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन वन एंड देयर इज लॉस ऑफ 20% ऑन इट, सो डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस। हमेशा जब भी आपको सिनारियो देके रखा है दैट सेलिंग प्राइस इज सेम, ओके, एंड ऑन वन यू गेट x% का प्रॉफिट एंड ऑन अदर यू गेट x% का लॉस, ठीक है, तो आपको हमेशा लॉस होगा और ये लॉस का परसेंटेज होगा x/10 होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रख लीजिए, सीधा ऐसा ही अप्लाई होगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अगर निकालना है, so that is you can say 20/10 whole square and that is 4% का लॉस, ओके, दिस इज द आंसर, ओके, हमेशा ऐसे ही होगा और ऐसे ही पूछा जाएगा, ओके, सो आप जरा भी चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज द सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। सो करने का तरीका क्या है भाई, एक्स इंटू एस पी इज इक्वल टू 25 इंटू सीपी। ये डेटा सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, एंड इफ द प्रॉफिट इज 25% देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पे सबसे बड़ा एजम्पशन है दैट ऑल परचेज्ड आइटम्स, ऑल विच यू हैव परचेज्ड, ठीक है, दे आर सोल्ड। जितनी आइटम्स खरीदी है उतनी आइटम हमने बेची है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए ग्रेट, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम यहां से एक बहुत मजेदार सा काम करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे दैट वी हैव टेकन जैसे 25 आइटम्स और हमने सभी आइटम्स बेच दी, ठीक है। सो हमने जब 25 आइटम खरीदी थी तो हमारा कॉस्ट हुआ था 25 सीपी। जब हमने 25 आइटम्स बेची सो वी अर्न मनी 25 एसपी। इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 25 सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। ये 25% इन्होंने दे के रखा है, ओके, ठीक है, इसीलिए हम इसको सीधा यूज करते हैं। चलिए ग्रेट, अब ये जो एसपी है उसमें से सीपी सीधा तो माइनस होगा नहीं क्योंकि वो वेरिएबल है, दो अलग अलग वैल्यू है, तो हमें इसको सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट मी कन्वर्ट दिस 25 सीपी इज इक्वल टू एक्स, सो 25 एसपी माइनस एक्स एसपी अपॉन एक्स एसपी is equal to 25%. Now here it is easy, that is 25 minus x upon x is equal to 1 by 4. 25% को हम 1 by 4 लिख सकते हैं and therefore this is easy. So this is 4 into 25 minus x is equal to x. So 100 minus 4x is equal to x and therefore you can say x is equal to 20. This is the answer, okay. This is an answer. I'm sure आप सब लोग अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ अ गेन ऑफ 23% was achieved by a total sale of 369. Now this is interesting. Selling price is 369, profit is 23%. Determine the amount of profit, okay. To get this we need to find out CP. How do you find out CP? In our case, if profit is 23%, then our selling price will be written as 1.23 of CP. I hope this is easy for everyone to grasp. मैंने क्या किया, CP plus profit percent of CP, CP plus 23% of CP. This is nothing but 1.23 of CP. ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हमारा सीपी था 369 and this is 1.23 of CP, so therefore CP is equal to 369 divided by 1.23, so therefore your CP would be 300 and therefore your profit is 69, okay. So this is easy, question number 5. Let's move towards question number 6. Question number 6 बोलता है that x% gain is achieved by selling an article at 225. So when you are selling at 225, your gain is, you can say x%. So 1 plus x upon 100 into CP. This is what your 225. And there is a loss. Loss कितना हो रहा है, x%. When you are selling at 135. 135 पे बेचने पे
वी आर गेटिंग अ लॉस कि भाई x 1 माइनस x अपॉन 100 into CP. Okay, so determine cost of the article. Okay, we need to find out what is CP. Okay, this is what we need to find out. ठीक है, so these are two equations. This is very easy. ठीक है, ये इक्वेशन को मैं दोनों को ऐड करूंगा. ठीक है, so क्या हो जाएगा, CP into 1, CP into 1 will be added, so that will make it to 2CP. Okay, ये x into this, अब यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, सो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो 2CP is equal to 225 plus 135. Okay, so that is, you can say, some around 360. So therefore CP is equal to 180, and that is what the answer is. CP is equal to 180. ठीक है, काफी इजी कहानी है. चलिए, ग्रेट. आई एम श्योर दिस इज कंफर्टेबल फॉर यू. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7. Some toys cost 15 for 20 toys. They are sold at 20 for 15 toys. Determine percentage profit. हमेशा ध्यान रखें, हमारा जो एक कंसेप्ट था कि हमने जितनी आइटम परचेज करी उतनी आइटम हम बेचेंगे. सो इस केस में हम पर यूनिट पे चले जाएंगे. दैट द कॉस्ट प्राइस इज 15 बाई 20. 15 के लिए टोटल 20 है, सो 15 बाई 20, दिस इज व्हाट द कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, 20 बाई 15. इन दोनों का डिफरेंस इज अवर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP, दैट इज 15 by 20 into 100. I think this is easy. Okay, this is 4 by 3 and this is, you can say, 3 by 4. Okay, so ये हो जाएगा आपका LCM ले लेते हैं हम. 4 4 जा 16 minus 9 by 3 4 जा 12. ठीक है, divided by 15 by 20. Okay, 16 minus 9 is nothing but 7 by 12 और ये हो जाएगा आपका 20 by 15. This is 5 3s are, this is 4 and this is 4 3. So this is 7 by 9. Okay, this is 7 by 9 is what your profit percentage. Okay, so this is your profit percentage. So profit percent is nothing but 77.77. Okay, this is what your percentage would be. Question number 8. An article was marked 50% higher than its cost price. So let us say cost price is 100. फटाफट करने का होता है, बीच में कहीं रुकना ही नहीं, सीधा आपको बोला है 50% हायर. सो एज्यूम करो आपकी कॉस्ट प्राइस 100 है और वहां से आपकी मार्क प्राइस हो जाएगी 150. ठीक है, देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 20%, सो वी गिव 20% डिस्काउंट ऑन 150 which is 30. So therefore you are selling at 120. Determine percentage profit. 100 was a cost price, selling price हो गया आपका 120 and you are getting 20% का profit. So this is 20% profit. This is easy. Moving for the question number 9. If selling price is doubled, profit triples. Find profit percentage. So let us assume we had a cost price. Okay, and then we have a selling price. ठीक है, let us cost price to be, let's say, X and selling price to be Y. And therefore your profit is, you can say, Y minus X. Okay, ठीक है, ये हमने assume किया है. This is assumption. We are starting with that assumption. है ना, कोई गलत नहीं है इसमें. ठीक है, if selling price is double, so let me make selling price is to 2y. ठीक है, and the profit triples. ठीक है, cost price के बारे में कुछ बोला नहीं है, so this remains same. So this is minus x. This is our new profit. This is our new profit is equal to जो original profit था उसका 3 गुना हो गया. So this is 3 into y minus x. So ये क्या हो जाएगा, 2y minus x is equal to 3y minus 3x. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका y इधर और ये 3x इधर आ जाएगा. सो दिस विल बी 2x. सो योर सेलिंग प्राइस इज ट्वाइस ऑफ x. कॉस्ट प्राइस x है, सेलिंग प्राइस 2x है. दैट मीन्स योर प्रॉफिट परसेंट इज 100%. ओके, प्रॉफिट परसेंट इज 100%. ठीक है, ये बहुत इजी है. x is your cost price और selling price अगर 2x होता है, so that makes it to 100% profit. Okay, let's talk about last question for the day. It says selling price of 29 articles. So 29 article का SP याद करें, ये सवाल हम आगे देख चुके थे, ऐसा ही सवाल था. 29 SP is equal to 19 article का cost price. ठीक है, find out the loss percentage. ठीक है, find out the loss percentage.
कैसे होता है लॉस परसेंटेज देखते हैं। 29 SP इज इक्वल 19 SP हमने बात करी थी। आप एक नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर होगा आपका चलेगा। लेट मी टेक 19। लेट्स से वी परचेज 19 आइटम एंड वी सोल्ड 19 आइटम्स, ठीक है। सो दिस इज अवर प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय 19 CP into 100। नाउ दिस इज गिवन डेटा, हम इसमें से रिप्लेस करेंगे क्योंकि CP और SP अलग अलग नंबर है, ठीक है। सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस, ये CP और SP को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 19 CP इज इक्वल टू 29 SP, ऐसा मैं लिख देता हूं। 19 SP माइनस 19 CP इज इक्वल टू 29 SP divided by 29 SP into 100. So the difference is 10 SP upon 29 SP into 100, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे हुआ भैया? इट इज 10 by 29 into 100, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। अब अगर ये 10 by 30 होता है ना, तो बहुत इजी था, 1/3 था, ये 33.33% होता है, ठीक है। अब ये 30 से थोड़ा सा कम है, विच इज 29। सो आंसर क्या होना चाहिए? 33% से थोड़ा सा ज्यादा। सो अप्रोक्सीमेटली इट इज 34%, ठीक है। सो आई होप दिस इज कंफर्टेबल फॉर यू, and with this I close this particular module, but very important part is क्लैट की तैयारी आप आगे बढ़ाते चलिए, आप इसको मिस ना करें, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करें, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली पार्ट को, है ना, एंड दैट विल गिव यू लॉट ऑफ एडवांटेज, ठीक है। ProTalent will continue to give you lot of support related to your CLAT preparation, ठीक है। सो आप उसको मिस नहीं करिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CLAT preparation. Have a great, you can say, CLAT preparation, get great rank, okay. Thank you very much and all the best.